friends, how are you doing today? I'm Ramandeep Singh and you are watching YouTube channel Ielts Coaching. Here I try to help you in your Ielts preparation in every possible way. और आज का जो वीडियो है वो है about the Ielts Reading module. इसमें आपको कई तरह के question types आते हैं और उनमें से एक है fill-ups, fill in the blanks. This type of question actually have three types. एक टाइप वो रहता है जिसमें पूरे पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स हैं वो स्कैटर्ड रहती हैं एंड एट एन एवरेज आपको एक पैराग्राफ में एक आंसर मिलता है. पहले पैराग्राफ से पहला आंसर मिलता है और एज यू मूव ऑन यू कीप ऑन गेटिंग द आंसर्स. Another one is जहां पर ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ में ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे क्योंकि एक पैराग्राफ में से वो पीस लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिज्म और अ प्रोसेस ऑफ अ मशीन. नाउ ये पूरा पीस एक ही पैराग्राफ में से लिया जाएगा एंड यू विल find all the answer in that particular paragraph. So obviously it makes it much easier because you don't have to look for the answers throughout the paragraph. और इसकी third type जो इसकी सबसे मुश्किल type है, once again you will find the answers in different part of the paragraph and for your ease there would be a box जिसमें आपको कई सारे options भी मिलेंगे. Easy होने के बावजूद भी ये मुश्किल हो जाता है because you have to locate these synonyms in the paragraph. The word would be there, but in the paragraph you would find a synonym. For example, आपको दिया जाएगा process and paragraph में आपको मिलेगा procedure. बहुत सारे ऐसे words रहते हैं जो हमें पता होते हैं, so they don't trouble, but there are other words that can give you some trouble, which are uncommon. But for all these three different question types of fill-ups, one trick works, and that is step one, you have to read the question thoroughly. Understand what the statement means and what word is missing. Number two, justify to yourself or identify the part of speech it is. कि वो noun है, verb है, adjective है, adverb है. Number three, look for the one word prior to the blank. The, a, ऐसे words होते हैं, obviously noun होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ये आंसर ढूंढने बहुत इजी हो जाते हैं क्योंकि पैराग्राफ में भी वहां पर ए जहां पर लिखा उसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आंसर बन जाता है. I must say it's not going to happen all the time, but there are lots of chances that you can find the answers in this way. Now, as I said, step one is read the statement thoroughly and understand it, and step two is identify the part of speech. Now, step three is move into the paragraph, keeping the keywords in mind. Read only that paragraph and that one statement जहां पर आंसर होगा. अनवांटेड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है और उस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल टेल यू दैट दिस इज एक्चुअली द आंसर क्योंकि वो पार्ट ऑफ स्पीच भी मैच करेगा, स्टेटमेंट की सेंस के साथ भी मैच करेगा, चाहे वो ऐसा वर्ड ही क्यों ना हो जिसका आपको मीनिंग भी नहीं पता. आई मस्ट टेल there can be some nouns with ending tion that can be new to you जो आपने कभी पहले सुने ना हो. फॉर एग्जाम्पल excursion, बट अगर वहां पर द लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है और पैराग्राफ में भी कुछ ऐसी ही सेंस नजर आ रही है, अगर आप ये वर्ड फिट कर भी देंगे तो भी चांसेस वुड बी वेरी हाई कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो. अभी मेरे पास है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइजेस फेच फ्रॉम डिफरेंट रीडिंग टेक्स्ट पैसेजेस. आपको उतना ही सेक्शन रीड करने को मिलेगा जहां पर आंसर हो सकता है. थॉरली क्वेश्चन को रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए द पार्ट ऑफ स्पीच, देन रीड द पैसेज, hit the keywords and look for that word, and later I will share the answer with you. This is a wonderful way of improving your reading and understanding different question types. I hope my videos are helping you in your Ielts preparation. Don't forget to subscribe the channel and share my videos with others. You must also share your score in the comments that how much you got correct in this particular exercise. I hope you are well aware कि अभी हम IELTS का ऑनलाइन कोर्स भी रन कर रहे हैं. उसका नाम है लॉकडाउन सीरीज जो अवेलेबल है IELTS कोचिंग एप्लीकेशन पे. आप चाहें तो किसी टाइम भी इस कोर्स को बाय कर सकते हैं and start practicing at home. It will help you to improve all the 4 modules of IELTS and help you to target 7 bands. It is both for academic as well as GD students. The link is in the description. Let's start today's exercise.
आज कोचिंग आप सभी करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट्स खुले नहीं हैं। आप ये भी ड्रीम रखते हो कि आप मेरे साथ आज ट्रेनिंग करें, लेकिन आप मोगा सिटी से काफी दूर रहते हो। वंस अगेन आपके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि यहाँ पर आप आकर मेरे साथ आज ट्रेनिंग करें, लेकिन आप सबका मैंने सोल्यूशन निकाल दिया है, एंड दैट इज माय ऑनलाइन कोर्स, दैट इज लॉकडाउन सीरीज। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा अपने घर पर बैठे आज की प्रैक्टिस, आज की प्रेपरेशन करने में, और इसमें आप प्रैक्टिस कर पाएंगे all the 4 modules of the IELTS in detail with explanation, tips and tricks, and on top of that, my writing samples as well. On top of that, we are offering you at the moment free speaking booster. इतना ही नहीं, आपको मिलने जा रहा है रीडिंग मटेरियल भी, 30+ रीडिंग टेस्ट सीरीज जो अभी हमारे IELTS कोचिंग एप्लीकेशन पर 250 प्राइस पर अवेलेबल है, but for the lockdown series buyer it is going to be absolutely free. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप व्हाट्सएप ग्रुप में 24/7 मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, and I will definitely be there to answer your queries. So I would certainly love to see you guys downloading IELTS coaching application. ये मेरा एप्लीकेशन है जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। एप्पल यूजर्स को डाउनलोड करनी होती है CLASSPLUS और ORG कोड एंटर करना होता है IELTS, और इसी एप्लीकेशन पे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आपको स्टोर ऑप्शन में मिलेंगे मेरे सारे कोर्सेज जिनमें लॉकडाउन सीरीज है, और आपको बाय करना है जस्ट फॉर 2100. दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली. You can buy it for 2100. On top of that, you will get free speaking booster and free reading test series. Now waste no time, buy this.